Assalamu alaikum and welcome to Let's Learn English Online. Today we are going to discuss the difference between neither and either. आज की वीडियो में हम either और neither के दरमियान फ़र्क को समझेंगे. Before moving on, don't forget to subscribe the channel and also don't forget to hit the bell icon below for more informative videos. Let's discuss the meaning of neither and either. Either and neither are used in a few different ways to express different things. In most cases, neither means not either. Either और neither को मुख्तलिफ मानी रखने की वजह से मुख्तलिफ मौक़ों पर इस्तेमाल किया जाता है. अक्सर औक़ात neither का मतलब होता है दोनों में से कोई नहीं. When either is used as an adjective, then it means one or the other of two people or things, and neither would mean not one or the other of two people or things. In other words, neither would mean not either. जब either को adjective के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है तो उसका मतलब होता है दो अफराद में से पहला वाला या दूसरा वाला, यानी दोनों में से कोई एक शख्स, और neither का मतलब होता है दोनों में से कोई नहीं. Observe the following examples here for better understanding. First example is you may borrow either pen, यानी आप दोनों पेन्स में से एक पेन ले सकते हैं. Now observe the second example here. You may borrow neither pen, यानी आप दोनों पेन्स में से कोई भी नहीं ले सकते. Now we will discuss the use of either and neither as a pronoun. When either is used as a pronoun, then it would mean the one or the other, यानी दोनों चीज़ों में से कोई एक चीज़. Neither would mean not the one and not the other, or it would mean not either, यानी दोनों चीज़ों में से कोई भी नहीं. Observe the following examples here for better understanding. First example is you may wear either of the bracelets to the party, which means you can wear the one bracelet or you can wear the other bracelet, यानी आप दावत के लिए दोनों bracelets में से कोई सा भी bracelet पहन सकती हैं. Observe the second example here. You may wear neither of the bracelets to the party, which means that you cannot wear the one bracelet and you cannot wear the other bracelet as well, यानी आप दावत के लिए दोनों ब्रेसलेट्स में से कोई भी नहीं पहन सकती. Now we discuss the use of either and neither as a conjunction. When either is used as a conjunction, then it will indicate two choices or possibilities. यानी जब either को conjunction के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है तो इसका मतलब दो अक़साम और चीज़ें होता है. Neither is used with nor to indicate two or more people, things, actions, and it will also indicate something which is not true. यानी जब neither को nor के साथ conjunction के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है तो इसका मतलब होता है दो चीज़ें, लोगों और कामों या अक़साम वगैरह में से कोई भी नहीं. Observe the following examples here for better understanding. First example is he will eat either steak or fish burger tonight, which would mean that he will choose one of the two options, यानी वो रात को steak या fish burger में से कोई एक चीज़ खाएगा. Second example is he will eat neither steak nor fish burger tonight, which would mean that he will not eat steak and he will not eat fish burger. In other words, he will not choose either of these two foods, यानी वो ना ही steak खाएगा और ना ही fish burger खाएगा, यानी वो दोनों चीज़ों में से कोई भी चीज़ नहीं खाएगा. Now we will discuss the use of either and neither as an adverb. When either is used as an adverb, then it means in addition to, and it is usually used after a negative statement. As an adverb, neither is used to introduce a negative statement. Adverb के तौर पर either को negative statement के बाद इजाफी तौर पर इस्तेमाल किया जाता है, और adverb के तौर पर neither को negative statement के आखिर में दोबारा negative statement बनाने के लिए लिखा जाता है. Observe the following examples here for better understanding. First example is the pens are lightweight and they are not expensive either, which means that pens are lightweight and additionally they are not expensive, यानी पेन हल्के हैं और महंगे भी नहीं हैं. Second example is just as you would not correct it, neither would I,
which would means that if you will not correct it, then I will not correct it either. यानी अगर तुम सही नहीं करोगी तो मैं भी सही नहीं करूँगी. Now we will discuss use of either and neither to agree with the negative statement. In informal speech, either and neither are used in the phrase me either or me neither to say that you agree with the negative statement someone has made. These two phrases mean exactly the same thing. आमतौर पर me either और me neither को बेतकल्लुफ़ी के साथ की जाने वाली गुफ्तगू में इस्तेमाल किया जाता है. me either और me neither के ज़रिए अमूमन इस मनफी जुमले का जवाब दिया जाता है जिसमें एक शख्स दूसरे शख्स का साथ देता है. Observe the following examples here for better understanding. In first example, a person is saying that I don't like this dress, so the other person also agrees with him by saying that me either. यानी एक शख्स कह रहा है मुझे ये कपड़े अच्छे नहीं लगे, तो इसके जवाब में दूसरा शख्स उसका साथ देते हुए कहता है कि मुझे भी अच्छे नहीं लगे. Observe the second example here. A person says that I wasn't happy with the way the show ended. In response, the other person agrees with him by saying me neither. यानी एक शख्स कह रहा है कि मैं शो के इख्तिताम से खुश नहीं हुआ, तो इसके जवाब में दूसरा शख्स उसका साथ देते हुए कहता है कि उसे भी कोई खुशी नहीं महसूस हुई. So this is it for today. See you in the next video. Just stay tuned with Let's Learn English Online for more informative videos.